Good morning, sir. Again, good morning, sir. Good morning, everyone. एंजल बेटा गुड मॉर्निंग। Good morning. अच्छा आज एंजल ने बाल बांध रखे हैं तो वो डर लग गया बीच में थोड़ी देर को। मुझे लगा एंजल ने बाल वाल अपने कट कर लिए, बॉय कट वगैरह करवा दिए, तो डर गया था। अच्छा बिल्ली कहाँ है सर पे जो बैठती है? सर वो रेस्ट कर रही है। रख दी। तो टेस्ट की प्रिपरेशन कर रही होगी कल के। Which test you have tomorrow? Tests are over or left? SST. SST. How many are left? Last. 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 That's So the last. tomorrow is your last test. SST. Yeah. Okay. Sir, tomorrow is our independence. Obviously. From UT2. But one thing I have to check today, that how this message came that the host has upgraded to the pro version. Yes, मुझे पता sir. नहीं, I have not Sir, in upgraded. mine it doesn't came. Sir, I think you have done payment for the pro version. Maybe Good morning, sir. हो सकता है कार्तिक ने पैसे दे दिए मेरी तरफ से। गुड मॉर्निंग बेटा। 1300 रुपए का, इट इज 1300 रुपीज पर मंथ द प्रो वर्जन, और 1300 तो मेरी सैलरी भी नहीं है। यस सर, क्योंकि आपकी सैलरी इससे बहुत ज्यादा है। हाँ जिसने ब्रेकफास्ट में बटर खाया है, ब्रेड बटर, बटर उसमें थोड़ा ज्यादा था। काश ऐसा ही हो जाए, मेरी सैलरी बहुत ज्यादा। चलिए वी 7th B students, how many students are there of 7th B? It is a combined class of 7th A. only, I think. अच्छा Sir, Ayush also. The Ayush also, sorry. Ayush Agarwal also is there. Beta, can you all please write your sections after your name? Edit your names and please mention your. Sir, written. Very good. Sir, written. Because Already written. Written. Nice. So जब ये ऐसा होता है कि all the 3 sections are combined, तो मुझे लगता है कि वैसे जनरली जितने बच्चे आते हैं क्लास में, जब तीनों कंबाइन कर दी जाती है तो आधे चले जाते हैं। Is it like that? तो देखते हैं, चलो और बच्चे तो आ गए, हमारा क्या काम है। चलो चल रहे हैं, बहुत हो गए बच्चे। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग अक्षत। अक्षत चंद्रा बेटा, प्लीज मेंशन योर सेक्शन आफ्टर द नेम। Okay, now let's start. चैतन्य बेटा, प्लीज मेंशन योर सेक्शन। चैतन्य, कार्तिकेय एंड हु एल्स इज देयर? वैसे तो मुझे पता है आप लोगों का सेक्शन, सी वाले तो सब मुझे पता ही है, बी और ए में कभी कभी थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है मुझे। ऋषिका, प्लीज मेंशन योर सेक्शन। ऋषिका वर्मा, ओके कर दिया, मैंने बोला ऋषिका ने कर दिया फटाफट। एनीवन लेफ्ट? नो। कार्तिकेय इज डूइंग। Sir, Akshat Chandra. अक्षत चंद्रा, हाउ आर यू? अक्षत,
with name in small letters and Chandra surname in capital letters. Sir, I had renamed. Acha, so wait, thank you. Sir, I think he is in the class, but he's not in the class. हाँ, he is virtually in the class. Virtual class में virtually present है. मेरी आंखों में धूल होगी जा रही है. चलिए आगे बढ़ते हैं. So beta, what to do in this section? Because in 7B students, can you tell me in maths what topic we are doing? अगर हम उसको छोड़ दें, अक्षर चंद्रा ने सर ने अपना एडिट कर लिया, सॉरी सेक्शन मेंशन कर लिया है, गुड. हाँ, राज नंदिनी is there? Yes. Yes, बेटा, can you tell me what we are doing in maths? रिवीजन वाला पार्ट छोड़ दीजिए, उससे पहले हम क्या कर रहे थे? चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे सर हमने. रिया इक्वेशन और यूनिटी मेथड, उसके बाद से हमने स्टार्ट किया ना सर. वेट सर वी वर डूइंग ट्रायंगल्स. You're doing triangles. And till which exercise we have done in triangles? Sir, wait a second. So 12. Exercise 15B we have done, completed or not? 15B, or have we started it yet or not? So we have not started. We are on exercise 15A. सर एक्सरसाइज 15 तक कर लिया है, इसके आगे करना. 15A क्वेश्चन नंबर 12 तक किया है बस अभी. 15A पे ही पढ़ेगा. Yes, sir. ओहो. 15B हमने स्टार्ट नहीं करी. Have you written the property, that property exterior angle property आप लोगों ने नोट कर ली थी अपनी कॉपी से? सेक्शन D. Yes. Okay, so what I am going to do in this class, I will, you can take this as extra class or an activity. आज एक activity करा देते हैं इस क्लास में. करा दें, activity करा दें कुछ. Yes, sir. Yes sir. Yes sir. Activity will be Yes, sir. good Yes, sir. for everyone. Everyone will enjoy the activity. और किसी का ये नहीं होगा कि loss हो रहा है कुछ. So because in all the sections में थोड़ा syllabus is not aligned, किसी में आगे किसी में पीछे है. So that is why let us do an activity. Okay, activity based on Pythagoras theorem. Let's do an activity based on Pythagoras theorem. Okay, so what you have to do, let me think. Sir, what? We are going to do an activity based on Pythagoras theorem. Okay, so what is Pythagoras theorem? Let me tell you. So I have already written the Pythagoras theorem. Let me change it to activity. Pythagoras theorem, activity. Sir, we have right definition. Sir, we can do activity below that. Yes, you can do it below that. So Okay, sir. this is the topic Pythagoras theorem, which you all will be studying in the chapter triangles only. Triangles chapter में ही आपको Pythagoras theorem के बारे में पढ़ना है. Okay. Now, let me first explain you what is Pythagoras theorem, and then I will tell you what the activity you have to do in this period. Okay, so Pythagoras theorem क्या होती है?
in any right angle triangle, don't write it in your copies, okay? Don't note it down in your copies. In any right angle triangle, whatever triangle you make, but it should be a right angle triangle. You can take sides, anything, any length you can take. अगर वो चाहे आप ये पतला सा ट्रायंगल बना दें, इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, या फिर ऐसा मोटा सा बना दें जिसकी हाइट कम हो, बेस ज्यादा हो. Any triangle you make, it should be a right angle triangle. So I have made 3 different types of right angle triangles here, but in all the right angle triangles there is one thing which is common. This Sir, side of the angles, triangle, there will be only 180 degrees. sum, so obviously the sum of all the 3 angles is always 180 degrees. This side is known as the side which is opposite to right angle. The side which is opposite to right angle is known as hypotenuse of the triangle. Hypotenuse of the triangle. Have you ever heard of hypotenuse? The word hypotenuse. Yes, sir. Let me write this. Yes, sir. This is known as Yes, sir. I don't know what it is. स्पेलिंग लिख दूं मैं यहाँ पर. टिपिकल सा वर्ड है. पाइथागोरस अंकल को जानते हैं? नाम सुना है कभी इनका पहले? Yes, sir. अंकल जी को जानते हैं. Yes, sir. I have seen his face on Google. अच्छा, वेरी गुड. तो So I pronounce it as hypotenuse. हाँ, हाइपोटेन्यूस. कई अलग अलग तरीके से लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं. कुछ अंग्रेज होते हैं वो ऐसे हाइपोटेन्यूस करके प्रोनाउंस करते हैं, तो कुछ इंडियन होते हैं वो उसको सिंपल हाइपोटेन्यूस बुलाते हैं, कुछ इसको हाइपोटेन्यूस बुलाते हैं. सो डिफरेंट तरीके हैं, बट द स्पेलिंग इज दिस इज हाइपोटेन्यूस. द साइड, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज ऑलवेज नोन एज द हाइपोटेन्यूस. ओके, जो साइड बेस में होती है दैट इज known as base, जो bottom में होती है side that is known as base, and this side is known as height. So all the right angle triangles have these type of things in them. Hypotenuse is generally represented with the letter C, and or maybe most of the times P also. C or P. P से भी represented, sorry, H, not P. Capital H. Height is also represented by the letter P, and base is represented by the letter B. In most of the cases, P इसको इसलिए बुलाते हैं because this is also known as perpendicular. Perpendicular भी बुलाते हैं इसको. So that is why height और perpendicular एक ही बात है. Perpendicular. Height और Sir, I have studied this theorem before also. हाँ, very good बेटा. So in any right angle triangle, चाहे वो कैसा भी triangle हो, there is, now I am going to tell what is the theorem that Pythagoras uncle has given. Pythagoras uncle ने theorem क्या बताई है वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ. Pythagoras uncle का कहना ये है, कोई सा भी right angle triangle ले लीजिए आप, the square of the hypotenuse, hypotenuse की जो भी length होगी, its square is always equal to the sum of the squares of perpendicular and base. Squares of perpendicular और base दोनों का स्क्वायर कर लिया और उन दोनों को ऐड कर दिया. ये दोनों चीजें हमेशा इक्वल आएंगी चाहे कैसा भी ट्रायंगल ले लीजिए. It should be a right angle triangle. ठीक है. So let us take an example. Let me give you an example of it. Suppose if I take the sides as 6 centimeter, कुछ भी नहीं ले सकते हैं आप, and 8 centimeters. ठीक है. So hypotenuse आपकी हो जाएगी 10. Suppose perpendicular I have taken as 6, base I have taken as 8, and the hypotenuse I have taken as 10 centimeters. Now you will see that the square of hypotenuse, hypotenuse square क्या हुआ? 10 square, that means 100. 100 हो गया. Perpendicular square, that means 6 square, it becomes 36, and base square, that means 8 square, it becomes 64. क्या perpendicular Yes, sir, it's square equal. को base square को ऐड करके 100 आ रहा है या नहीं आ रहा है? चेक करिए. Yes, it is equal to 100. Yes, sir. So can we Yes, say sir. that
perpendicular square plus base square is equal to hypotenuse square in all type of right angle. Yes, sir, we can say मैंने that. triangle बनाया था, assume करा था right angle triangle, जिसकी मैंने perpendicular ली थी 6, base ली थी 8 and hypotenuse 10 ली थी. So it is a right angle triangle. Now you see that the square of hypotenuse is equal to the sum of squares of perpendicular and base. Okay. Sir, if the value of if the value of is not given of any base or perpendicular, so what can we do? Let me tell you now the activity. जब आप activity करेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ. So I am giving you an activity. You take out a scale and a protector and pencil. ये तीन चीजें आपको चाहिए अभी. Everyone, please take it out from your geometry box. क्या क्या बोला मैंने? Scale, protector. Sir, right now I don't have protractor. Mine is broken. Do you have a compass? Yes, sir. Compass से do you know how to construct a 90-degree angle? No, sir. नहीं पता. So बेटा एक काम करो, तुक्का मार के 90 डिग्री बनाना आता है? Yes, sir. तुक्का Yes, मारना sir. सबको आता है. वो तो सभी को आता होगा. हाँ तो वो फिर तुक्का मार के बनाना पड़ेगा. Hit and सर run. मेरे पास स्केल और प्रोटेक्टर दोनों है. Sir, this theorem only applies in right triangle. Yes, very important thing. The theorem applies only in right angle triangles. Okay, very important thing. Conditions apply. This theorem applies only in a right triangle. ठीक है? So what activity you have to do there? पहले आप अपना सामान निकाल लीजिए. Then I will tell you what to do. ठीक है बेटा? Yes, sir. ले लिया. So tell me when you all are ready. निकाल लिया. सर रेडी. Ready? Sir, ready. Sir, ready. Sir, we have to take a pencil also. हाँ pencil also. So what you have to do here, you have to construct a right angle triangle where you will take the base. सबसे पहले you have to make a base of 12 centimeters. Make a base of 12 centimeters. So base में अगर if I am taking the base as the side BA side को मैं base ले लेता हूँ. I will be doing something like this. ऐसा एक triangle मैं बनाने वाला हूँ. Where I am taking BA as the base of the triangle. The length of BA I will take as 12 centimeters. I will take angle B 90 degrees. कैसे बनाएंगे angle B 90 degrees? With the help of, how will you construct angle B 90 degrees? प्रोटेक्टर. With the help of a Protector. It is your choice. If you want to construct it with a compass, you can do that also. वो भी कर सकते हैं आप. And then you will take the side BC. Side BC you will make of 5 centimeters. ये तीन काम आप लोग कर सकते हैं. Can you all do Yes, this? sir. Okay. Then what you have to do? Then you join CA. This is the next step. पहला step ये बनाइए, दूसरा step ये करिए, third step ये करिए, fourth step join CA. Then fifth step measure CA. CA की length measure कर लीजिए. Then last step verify Pythagoras theorem. Okay, sir. Sir, what is the meaning of? सर बेस तो आधे मतलब पूरे पेज का ही बन जाएगा. नहीं बेटा 12 सेंटीमीटर. You can Sir, why? make it in landscape mode. समझ गए? Got it? Make Sir, it in मेरे में तो landscape space mode. बचेगी. Yes, sir. 12 Sir, centimeters what से will will be be the the base? Horizontally. Sir, how much? Sorry बेटा. Sir, what will be the length of the base?
take the base as 12 centimeters. BA. Okay, sir. Base 12 centimeters. Take the perpendicular BC 5 centimeters. Make angle B 90 degrees. उसके बाद join CA, join the side CA. CA को join करने के बाद measure करिए उसको और फिर पाइथागोरस verify करिए क्या पाइथागोरस थ्योरम verify हो रही है या नहीं हो रही है, ये आपको मुझे बताना है. Got it? What the activity is? Use of protector. प्रोटेक्टर से एंगल बी 90 का बनाना है बेटा. कंस्ट्रक्ट एंगल बी 90 डिग्रीज विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर. सर बन रही है 5 का. सर 5. Start doing it. It will be good if you post show me your figures in a video, or you can post it on the group also. सर कुछ ऐसा बना. After making the figure, you can show the figure in the video or in the group. वीडियो में दिखा दीजिए मुझे if you prefer. सर दिखा रहा हूँ. जी मिश्रा जी दिखा रहे हैं. हाँ मिश्रा जी मैं आपकी दिख रहा हूँ. वेरी गुड बेटा, बहुत नीट एंड क्लीन बनाया तुमने. पहली बात तो sides you have measured, you have taken the sides properly, all the sides proper Yes, length sir. ली. Yes. 12 and 5 centimeter. Okay, now measure the length of CA. Wow. Angel beta, you're doing it. Yes, sir. After making the figure, show it to me. आदित्य कुमार Yes sir. बना लिया बेटा, दिखाइए अगर बन गया तो. Others also. Prishika. Yes, राज sir. राज बेटा, राज बुलाऊंगा मैं. राज you made it. Yes, sir. I'm making sir. Raj Nandini, I want to talk to you. Can I? Yeah. Yes, sir. हाँ बेटा, you are a new student ना in the school? Yes, sir. New admission. Before this, you were in which school? You were in Bareilly or out of Bareilly? Sir, I was in Rajasthan, Jaipur, APS school. Okay, so you belong to Rajasthan only, or you are a No, sir. I belong to Rajasthan only. Rajasthan only? Okay. Sir, So it is like this. your father is in which department? Very good, Sir, beta. Sir, he's an army doctor. Army office. अरे वाह. That's good. Nice. Sir, he's an army doctor. Army doctor. The answer is 13. तो और अच्छी बात है, डॉक्टर प्लस Yes, आर्मी दोनों exactly. चीजें आ गई. And mother, is she a housewife or she's working? Sir, she's a housewife, but before Jaipur, she also teaches in army school. Okay, very good. Which subject? Sir, she Hindi, maths. Okay, very nice. He has taught in school. Sir, the hypotenuse is coming 13. Hypotenuse is coming 13. Very good. Very yes, sir. 13. good. Excellent. The hypotenuse. How many of you are getting the length of hypotenuse equal to 13 centimeters? Sir, me. Very 13 good. centimeters. Payal is getting the length of hypotenuse 13 For me. centimeters. Maybe it could be a variation of 1 mm, something like that. But वो थोड़ा सा जो variation आ रहा है, you can ignore it. You will see that it will be 13 centimeters. Okay. Ridhima, are you Sir, showing? my also 13 centimeter. Sir, my also 13 centimeter. Ridhima? Sir, my also 13 centimeter. Very good, beta. Ridhima, can you show me a figure? Sir, please see. Yes, sir. Sir, please see. Wait, who's showing? Tell me your name first. Sir, mine also 13 centimeter. Okay, very good, very good. Sir, I am good. Shikhar. Good. Ridhima, please beta, I see have seen. Very good. Sir, my one is like this. Vidushi, are you showing? Sir, please see. Very good, Vidushi. Yours I Sir, have. please see. And who else? Aditya Kumar, very good. Who else is there? Who is showing? Naitik is showing. Naitik,
नैतिक बेटा ये जो बेस है दिस इज नॉट 12. ये जो बेस आपने बनाया दिस इज नॉट 12. Sir, please see. Is it 12 centimeters BA, the length of BA? It is not 12 beta. It is something else. Sir, mine is also coming 13. Very good. This was Angel. मिश्रा जी बहुत बढ़िया. आपने तो वेरीफाई भी Yes. कर लिया है. मिश्रा जी तो एडवांस आदमी है. मिश्रा जी तो खुद ही थ्योरम बना देंगे मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में. मिश्रा जी थ्योरम No, sir. नहीं बनाओगे? अरे बना देना यार, क्या बुराई है. मैं थोड़ी हेल्प कर दूंगा और क्या, मेरा नाम भी लगा देना उसमें. मिश्रा जी प्लस टंडन जी थ्योरम. Sir, done. Yes, sir. Sir, done. मैं तुम्हें असिस्टेंट दे दूंगा थोड़ा, मतलब Sir, अपना. perpendicular 5 centimeter. शिखर आर यू No, sir, शोइंग you are my guru. Okay. Shikhar, can you show it to me? Shikhar, beta. Yes, sir, I'm showing. Yeah. Sir, please see. Uh, Sir, Alind, please see. where is it? Alind, Sir, I yeah, have measured the length also. very good. Alind, very good. 13 centimeters आ गया आपका. Very good. Yes, sir. Shikhar, where are you? I am not able to see. Where are you, Shikhar? Aditya Kumar, very good. I have seen it. Sir, एक Yes, Shikhar. Very good. Shikhar, what is the length of CA? sir, 12. ये या तो तुमने कॉपी थोड़ी सी टेढ़ी पकड़ी है या फिर मतलब बना टेढ़ा, या फिर कॉपी तुमने हो सकता है नहीं सर, एंगल भी मुझे सर मेरा वीडियो मेरा हो रहा है इसमें. एंगल भी थोड़ा सा मुझे 90 से बड़ा दिख रहा था. मे भी हो सकता है कॉपी बिकॉज ऑफ द वीडियो. ओके, वेरी गुड. सर मेरा हो रहा है वीडियो इसलिए. Measure the length of CA. Angel is showing. Angel Anand. Yeah, very good. Is it 13? Yes, correct. Very good. Angel. Who else is showing? Payal, are you showing it? Angel beta, very good. हाँ जी, Payal. अभी कुछ बच्चे बचे हैं. मनीर कौर बेटा, स्टफ पराठा खाया यार. Please see, I am showing it. अच्छा, who is showing? Payal is showing. अच्छा, wait. Let me search you. Where is Payal? थोड़ा ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है यार. कहाँ है? Yes. Payal, very good beta. Payal, 13 centimeters again. Very good. Seen it. Great. Maneer is showing. Maneer Kaur. Yes, sir. हाँ, दिखाओ बेटा. लक्ष्य कुमार कहाँ हो? भाई हाइट बढ़ी नहीं बढ़ी अभी? छुट्टी में घर बैठ के हाइट बढ़ गई या नहीं बढ़ी? Maneer is showing. Maneer, very good beta. Maneer, seen it. So please see. Lakshmi Kumar is virtually attending the class. Yeah, who is showing? Tell me your name. Sir Aditi. Aditi beta, let me search you first. Yes, got it. Aditi, very good. What is the length of CA, Aditi? What is the length of So CA? 13 centimeter. Very good, very good, very good. 13. Okay, so all of you are So getting the 13. length of CA. I have also done, but I can't see. Yes, sir. Are getting the length of CA 13 centimeters. इतना आप सबने देख लिया कि अपने आप automatically it is coming equals to 13 centimeters. Now let us verify कि Pythagoras theorem के according CA की length 13 centimeters तो आ रही है. Pythagoras theorem verify हो रहा है या नहीं हो रहा है? Let's find. तो Pythagoras Yes, sir. theorem हो रहा है. hypotenuse square. That means what is the length of hypotenuse in this case? 13. CA is the hypotenuse. ये सब आप सबका 13 सेंटीमीटर आ रहा है और BC आप सबने 5 बनाया था. Look at the figure. It is 13. So hypotenuse is 13 centimeters. What is the square of 13? Everyone? 169. 169. Very good. 169. 169. Now let us find the sum of the squares of the other two sides. That means perpendicular. 25 plus 144. 25 plus 144. It gives 169.
Perpendicular square means perpendicular is 5. You all can see what is the length of perpendicular. It is 5. 5 square. And base is 12. 5 square plus 12 square. 5 square की value क्या होती है? It is 25. Are you all doing this? And 12 square is 144. 144. 144. Yes, sir. Now, if you find out that the sum of these two is always 169, क्या ये verify हो रही है Pythagoras theorem? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मैं यहाँ पर अपना डायलॉग जो है वो चिपका सकता हूँ. क्या डायलॉग है आप लोग समझ रहे होंगे, शायद किसी के दिमाग में आ गया होगा. अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल नहीं आया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा. सर ये तो हो ही नहीं सकता, कुछ ऐसा दीजिए जो हो सके. हाँ तो लेकिन सर हम उसे ट्राई नहीं करेंगे. तो तुम ये चाहते हो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा? सर ट्राई नहीं करेंगे. नो सर ट्राई नहीं करेंगे, ये तो कम है. तो फिर अच्छा. Sorry. I think, sir, there is a network problem. Okay, Laksh is saying that there is a network problem. Okay, your voice is not coming. Okay, Laksh, have you made it? You can reply in the chat box. You successful. Sir, if there is any number in which there is no square, so how we will find? उस नंबर का स्क्वायर निकालना पॉसिबल नहीं है. This is you can find the square of any number, whether if it is सर a ऐसा हो नहीं सकता. number also. Suppose मैं नंबर ले लेता हूँ. If I take suppose 4.5, the side of the any side, if I take 4.5, so square of 4.5 is 20.25, 20.25. तो वो decimal में आ जाएगा, no problem in that also. So you can find the square of any side. So, sir, how we will find the square of prime numbers? Square of prime numbers 13 का square 169 ये है तो square of prime number. Sorry, sir, the square root of prime numbers. Square root निकालने की जरूरत क्या है यहाँ पर? कहीं पे मैंने square root निकाला है बताओ? No, sir, अगर आगे जाकर ऐसा कोई क्वेश्चन आया हाँ तो that we will find out with the long division method. There is a method that you are going to study in class 8. How to find the square root of prime numbers. वो हम class 8 में पढ़ेंगे. ठीक है? अगर आप चाहते Okay, sir. अलग से आपके घर आकर के मैं आपको स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं मैं बता सकता हूँ. ठीक है? Okay, sir. Okay, so you can all of you, I would suggest you to make any triangle, any right angle triangle, make it and measure all the three sides. कोई भी एक right angle triangle बना लीजिए. Take any sides, measure all the sides and then verify the Pythagoras theorem. Do it. कोई भी triangle बना लो. Try to do it. Prishika beta, you made it. Are you there? Prishika, can I see your video? Yeah, where are you, Prishika? Yeah. Can you show me your figure, Prishika? Sir, I took base as 5 centimeter and perpendicular as 6 centimeter. So the
addition of both the squares is coming 61. So what is the square root of 61? You don't have to find the square root. You measure the side, the third side of the triangle, hypotenuse की length measure करो, और वो आपका decimal में कुछ आएगा. So approximately, Okay, sir. when you find the square of the third side, hypotenuse का जब आप square निकालेंगे, you will see that it will come near to 61 only. Okay. So it is coming around 7.7 or 8. 7.7. So when you find the square of 7.7 or 7.8, you will see that it will come near to 61. Okay. So hence again verify. Okay, sir. Find the square of 7.7. What is it? 7.7 नहीं आना चाहिए वैसे. I think थोड़ा छोटा आएगा शायद. Maybe. हो सकता है 7.7 आए. - 7.6 के आसपास आएगा कुछ शायद. I think. Okay, so was this activity helpful in making you all understand what is Pythagoras theorem? Have you all understood Yes, what? sir. Yes, sir. Okay, so the motive is solved. I wanted to explain what is Pythagoras theorem. Okay, so thank you for this period, everyone. Bye bye. Take care. Thank you. Thank you. Okay, bye bye.